Welcome everybody. Today we'll start the chapters of class 11th biology, and the first chapter of class 11th biology, that is the living world, and we'll discuss this chapter in two parts, and today we are going to discuss the part 1 of this chapter. Okay, so in this part we'll be discussing what is living, diversity in the living world, nomenclature of organisms, binomial nomenclature, taxonomic categories, taxonomical hierarchy. So, first of all, we should know what is living, which things are considered as living. In your previous class, that is in class 10, you have studied so many life processes. That means if the processes like digestion, excretion, transportation are taking place in a body, then that body is considered to be living. Okay. So, here we'll discuss in a different way. We'll define the living beings in a different way. Okay. So, objects having characteristics of cellular organization, growth, reproduction, ability to sense environment and give response, metabolism, etc. are the characteristics of living organisms. Okay. But here we'll discuss these characteristics one by one, and some of them may be the defining properties of the living organism and some of them may not be. Okay, so that we'll discuss here to describe what is living and what is non-living. Now, let us discuss the first criteria, that is first characteristics by which we can consider a thing or a body to be living or non-living, that is the growth. In your previous class also you have studied that all living organisms grow. Okay, so let us discuss how the growth, whether it is a defining property of a living organism or not. So what is growth? Increase in mass or number of cells characterizes the growth. The plants grow throughout the life. Like you may be thinking that the plant is not growing lengthwise. Then how the growth is taking place throughout the life? But I say yes, because the plant throughout its life develops branches, develops leaves, develops fruits, flowers. So these are nothing but the growth. So the plants grow throughout the life, but the animals grow to certain age. So animals parts of the animal body never grow throughout the life. Always there is a limited growth. Okay. So animal grow to certain age only. Now the question comes whether the growth, property growth, is only seen in living organism or also seen in the non-living organism. Yes, the growth is also seen in non-living objects. So how do they grow? They grow externally by accumulation of materials on the surface. So here you can cite examples like the formation of glaciers, formation of mountain, sand dunes. So these are due to the accumulation of the substances or materials on the surface, because of which the size of a particular object increases. So that is a growth. But in living objects, the growth is taking place from inside. But in both the cases, growth is taking place. Okay, so that's why, since growth can take place in both
living and non-living things. So the growth cannot be considered as defining property of living beings. So if something is growing, then we cannot say that it is exclusively your living organism. It may be non-living also. Okay. So like this you can see grow in case of growth. Always it is not that there will be an increase in size of the object. Okay, that may be decrease in the size during growth. For example, during that is germination of potato tuber or germination of the ginger. So when the bud starts growing, as the size of the bud increases, gradually the size of the potato tuber or the rhizome of the ginger decreases in its size. Okay. Similarly, onion, you might have observed. When you put onion in water or you will put it in the soil, moist soil, then what happens? Initially, the root will grow and simultaneously the stem will also start growing. So, as the stem starts growing, gradually the bulb becomes hollow and it decreases in its size. So, here growth is when growth is taking place in some part, then the other part is reducing in its size. So growth is always not related to increase in size. Okay. Now the next feature is reproduction. So in your previous class you have studied that reproduction is one of the characteristic feature of living organism. But here today we'll discuss that reproduction is not the defining property of a living organism. Okay. So what is reproduction? It is the characteristics of living beings to produce progenesis, possessing features of their own type, or production of own kind is called reproduction. Okay. And this reproduction is of two types, as you know, that is sexual and asexual type of reproduction. Different organisms reproduce by different methods. Like fungi reproduce asexually by the formation of spores. The lower organisms like planaria, sponges, they reproduce by fragmentation and regeneration. Okay, the whole body gets fragmented and then each part of the body that contains a portion of nucleus that develops into a new organism. So this is also a method of reproduction. Similarly, like your moss and that is bryophyta and pteridophyta that you have studied in class 9. Okay, so they also reproduce by some special methods. And in unicellular organism, this is very very important, you should know. The unicellular organisms, in this case, the growth and reproduction are synonymous. How? See, the growth of any living organism takes place by increase in the number of cell or increase in the size of the cell. Okay. In unicellular organism, when the cell divides, then it is the process of reproduction. Because as you know, in amoeba, in previous class you have studied about binary fission. In this type of reproduction, the amoeba is dividing into two cells and those cells are the daughter cells. Okay, so that's why the growth and reproduction in case of unicellular organisms are synonymous. Okay, so here if we will say that reproduction is the defining property of a living organism, then we cannot prove it in case of those organisms which cannot reproduce. Even in human being, there are so many male and females are there who are not reproducing. They don't have offsprings. Okay, for example, the intersex, जो इंटरसेक्स होते हैं या फिर जो उनको लीनीफेल्टर सिंड्रोम होता है या फिर टर्नर सिंड्रोम होता है, जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस.
They cannot give birth to an offspring. Similarly, in bee, there are three types of bees. One is your drone, which is the male, then queen and worker bee. Out of these three types of bees, the worker bee can never reproduce. So can you say that these organisms, those which are not able to reproduce, cannot give birth to an offspring, are non-living? Absolutely not. Okay. So the reproduction cannot be defined as a defining property. It cannot be considered as a defining property of the living beings. Now we'll discuss the other characteristics, that is metabolism. Let me first tell you what is metabolism. In the living body, always there is several types of chemical reactions are taking place, and the metabolism is the sum total of all these chemical reactions. And these chemical reactions are of two types. One is anabolism, other is catabolism. Or you can say anabolic reaction, other is catabolic reaction. So let me tell you the difference between anabolism and catabolism. In anabolism is a constructive process or synthetic process during which the simpler substances are combined together to form a complex substance. Okay? तो यहाँ आपका छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल या फिर कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म होता है. सो इट इज ए कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस. सो इट इज अनाबोलिज्म. व्हाट इज कैटाबोलिज्म? कैटाबोलिज्म का मतलब है द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स are degraded. It is a degradative process or breaking down process. Okay. So in catabolism, breakdown of the complex molecule takes place and the simpler molecules are formed. So can you give example here? The best example of anabolism and catabolism are your photosynthesis and respiration. Okay. So anabolism, as I said, it is a constructive process. So out of photosynthesis and respiration, which one will be anabolic process? Definitely it is photosynthesis, because in photosynthesis the synthesis of food, that is the glucose molecule, takes place by using the raw materials, that is sunlight, water and carbon dioxide. So ये तीन चीज को लेकर एक complex thing is formed. One complex thing is formed, that is glucose. So it is a anabolic process, constructive process or synthetic process during which the food is synthesized. So the photosynthesis is an anabolic process. Similarly, come to the catabolic process. Catabolic process, as I said, it is a degradative process or breaking down process. So take the case of respiration. In respiration, what happens? The breakdown or oxidation of the food, complex food takes place, and the simpler substances are produced and energy is released. So here the glucose is broken down to produce carbon dioxide and water, along with which the energy is released. So it is a destructive process. Okay, or degradative process. The food is degraded. So it is a catabolic process. So both catabolism and anabolism together constitute the metabolism. Okay, or the metabolic reaction. And you cannot say a thing as living if the metabolism is not taking place in it. अगर किसी चीज में मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, then you cannot say that it is living. But in contrary, अगर आप मुझे पूछोगे, chemical reactions are also taking place in our lab. We are carrying out many chemical reactions in our lab. Yes, you are absolutely correct. कि एक टेस्ट ट्यूब में केमिकल रिएक्शन हो रहा है. Can we say that test tube is living? No, absolutely not.
Because along with metabolism, some other defining properties are also there. So if all these properties are present together, then that will be considered as your living organism. Otherwise, simply metabolism is there, then you cannot say that it is living organism. But metabolism is one of the defining property of living organism. You cannot say, you cannot cite any example of any living organism in which metabolism is not taking place. But you can give examples of living things in which growth is not taking place, in which reproduction is not taking place. Okay, but metabolism is not taking place. You cannot say such living organisms. Okay. Now let us discuss the next criteria, that is the cellular organization. So that is, you know that the fundamental unit of life, the structural and functional unit of the life is the cell and their product. So cell, the fundamental unit is cell, it is clear. But what is the product? How the products are obtained out of the cell? Yes, it is metabolism. सेल में कोई केमिकल रिएक्शन होता है तभी कोई प्रोडक्ट निकलता है. लाइक सपोज से हार्मोन्स. So hormones are synthesized in the cell. But how they are synthesized? So hormone is a product of cell, a particular type of cell. Enzyme is a product of a particular cell. It is released from a particular cell. But how they are produced? By chemical reaction. Okay. So cellular organization along with metabolism. So only metabolism cannot be the defining property. So metabolic process, when it is taking place in a thing with cellular organization, then it will be considered as living organism. Okay, and that's why cellular organization is the defining property of living beings. The next characteristics let us discuss, that is consciousness. What is consciousness? It is the ability to sense environment and respond to the environmental factors. Okay, so here also there may be some confusion. We know that self-consciousness is there in all living beings, starting from unicellular organism, that is bacteria, to the human being, the complex organism. Okay, so they respond to the environmental factors like light, water, temperature, and other organisms, pollutants, etc. But here you can say that I went to a mall where when I come nearer the door automatically opened because there was a sensor. So the door is responding. So the sense that is, it is sensitive. The door is sensitive. So can you say that the glass door which was there in front of me, when I came closer to that, it opened, is living? No, absolutely not. But still consciousness is a defining property of a living organism. So what is the conclusion now we are getting? The living organisms can be considered as self-replicating, evolving and self-regulating interactive systems capable of responding to external stimuli. Okay, so that means if a substance or material is having cellular organization and metabolic processes are taking place, and along with that the thing is responding to the external stimuli, then it is called living organism. And if these things are there, then automatically the organism can replicate. It can increase its number. It can evolve. It can undergo changes in due course. Okay. So it is a self-regulating interactive system. So
Nobody, no other person can regulate the internal system of your body. आपके बॉडी का इंटरनल सिस्टम को कोई और रेगुलेट नहीं कर सकता. So it is a self-regulating interactive system. Okay. So this is the final definition of a living organism. Now, now these living organism in the world, there is varieties of living organism. Okay, and this is called biodiversity. So what is biodiversity? Biodiversity is the certain form of two words, biological and diversity. It means all the varieties of life that can be found on earth, that may be plants, animals, fungi and microorganisms, as well as to the communities that they form and the habitats in which they live. Okay, together it is called biodiversity. Diverse means varieties, biological means living. So when there is a diversity in the living system or living organism, then that is called biodiversity. Okay, and the described number of species till now discovered ranges from 1.7 to 1.8 million. Okay. Now we'll discuss the classification of organisms. Okay. Now, why this classification, nomenclature, then systematics are required? Uh, See, when a child take birth in your family, what do? First of all, you all discuss to give a very good name to that child. Okay. And on what basis you want to give the name to that child? Sometimes basing on the appearance of the child, sometimes basing upon the behavior of the child, expression of the child. ठीक है, तो इसी तरह आप नाम देने का पहले सोचते हो. अगर हम नाम नहीं देंगे बच्चों को पैदा होने के बाद तो क्या होगा? आप घर में उसको बुलाओगे, किस किस नाम से बुलाओगे? किसको बुला रहे हैं हम? कैसे पता चलेगा? सो every individual, every living organism must be given a name. उसको एक नाम देना है. ठीक है, तो that system of giving name to an organism is called nomenclature. Okay, but अभी देखो, जैसे मैं आपको घर में मैं बुलाती हूँ आपको, सपोज से आई एम कॉलिंग माई ब्रदर लाइक बिट्टू. ओके, बट आउटसाइड जब बाहर जाएंगे उसको अगर बिट्टू बुलाएंगे तो कोई कोई नहीं समझेगा. बिट्टू के नाम से और कोई हो सकता है, तो उसका एक स्पेसिफिक नाम हो सकता है, तो उसी स्पेसिफिक नाम से ही उसको बाहर के सारे लोग जानेंगे. तो सिमिलरली these living organisms are present throughout the world. तो throughout the world में इस organism को किस नाम से जाना जाएगा? लोकल नाम से तो हम उसको लाइक यहाँ पर हम देखो, जैसे इन इंडिया वी आर टेलिंग कुत्ता बोल रहे हैं जो आपका डॉग को. अगर आप बाहर जाते हो और किसी कंट्री में वहां डॉग बोलेंगे, यहाँ फिर हम किसी दूसरे लैंग्वेज में और कुछ बोलेंगे, बट ऐसा होगा तो हम समझ नहीं पाएंगे, है ना. तो इसीलिए इसका लोकल नेम से किसी इंडिविजुअल को हम पहचान नहीं सकते. सो दैट्स व्हाई द ऑर्गेनिजम्स आर नेम्ड एट ग्लोबल लेवल. ओके, so the scientific names are given to the organisms after identification acceptable at global level. ग्लोबल लेवल में पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि हाँ, ये ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप के अंडर रहेगा और इसका नाम ऐसे दिया जाएगा. ठीक है, उसके बाद उसको साइंटिफिक नेम दिया जाता है. एंड द नोमेनक्लेचर इज डन एज पर द क्राइटेरिया गिवन इन ICBN. आपका जो होता है जितने सारे प्लांट्स है उसको नाम दिया जाता है by getting the approval from the ICBN. ICBN क्या होता है? इंटरनेशनल कोड फॉर
बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ये इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ICBN से अप्रूवल मिलने के बाद यू कैन गिव नेम टू साइंटिफिक नेम टू एनी प्लांट स्पीसीज डिस्कवर्ड। ओके, सिमिलरली एनिमल्स को नाम देने के लिए आपका ICZN, that is International Code for Zoological Nomenclature. Okay, so these two, I mean, by getting after getting approval from these two, only the name can be given at the global level. Now we'll read about the binomial nomenclature, that is the most accepted system of nomenclature. So this was given by Carolus Linnaeus, and according to Carolus Linnaeus, while giving scientific name to any organism, it may be plant or animals, we have to follow certain rules. So let us see what are these rules. These question may come as your 3 marks or 2 marks question. So uh, let us see what are the rules. The rule is that the first word is generic name and the second word is specific epithet in scientific name of organism. जैसे किसी ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाता है तो दैट नेम, उस ऑर्गेनिज्म का नाम में 2 पार्ट होना जरूरी है। जो पहला पार्ट होता है या पहला वर्ड होता है उसको कहा जाता है जेनेरिक नेम, और दूसरे वर्ड को कहा जाता है उसको स्पेसिफिक नेम। ओके, जैसे आपको मैं बताऊंगी आपके नाम में, जैसे आपका एक आपका जो फर्स्ट नेम होता है, फिर मिडिल नेम होता है, फिर सर नेम होता है, ठीक उसी तरह बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम में 2 नेम, 2 वर्ड्स आर देयर इन ए नेम, बाइनोमियल, दैट्स व्हाई। सो 2 वर्ड होता है एक नाम में, जिसका फर्स्ट वर्ड को कहा जाता है, फर्स्ट नेम को कहा जाता है जेनेरिक नेम और सेकेंड वर्ड को कहा जाता है स्पेसिफिक नेम। व्हाट इज द नेक्स्ट रूल? नेम्स आर इन लैटिन और लैटिनाइज वर्ड। ये जो नाम हम देंगे जेनेरिक नेम या स्पेसिफिक नेम, दैट शुड बी इन लैटिनाइज वर्ड। अगर थर्ड रूल इज दैट नेम्स इफ हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन एंड इफ प्रिंटेड आर इटैलिसाइज्ड। अगर हम हाथ से लिखेंगे तो नाम लिखने के बाद हम उसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, जेनेरिक नेम को अलग से अंडरलाइन और स्पेसिफिक नेम को अलग से अंडरलाइन करेंगे। लेकिन अगर हम प्रिंट कर रहे हैं, कंप्यूटर से प्रिंट कर रहे हैं, तो हम उसको इटैलिक्स में लिखेंगे। व्हाट इज द फोर्थ रूल? इसमें जो हमने 2 नाम दिया है, द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट नेम, दैट इज जेनेरिक नेम, should start with capital letter. Okay, generic name का first letter should be capital and specific name का जो first letter है that should be small letter. तो generic name का first letter capital होगा, बाकी सारे लेटर स्मॉल लेटर होंगे, और स्पेसिफिक नेम का सारे लेटर स्मॉल लेटर होंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंजीफेरा इंडिका, जैसे यहाँ मैंगो का नाम है, मैंगो इज द लोकल नेम, सो मैंजीफेरा इज द जेनेरिक नेम, इंडिका इज द स्पेसिफिक नेम। ओके, सो मैंजीफेरा you can see the generic name starts with capital letter, but the specific name indica that starts with small letter. Okay, so like this you can follow the rules while writing the names of any organism, the scientific name. Okay, and if in certain cases the third name is also there. Okay, so in that case that is the name of the author. Okay, now there is a big huge biodiversity, but how can you study this the behavior, the habitat, the feeding habit, and what is their importance in the ecosystem or in the environment? How can we study it? It is not that much easy. Okay, so to make it easier, the study of organisms are classified into groups or categories, and these groups are called taxa.
ठीक है। ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए हम एक साथ तो स्टडी नहीं कर सकते, सबका अलग अलग बिहेवियर है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबका अलग अलग हैबिटेट है, हैबिट अलग है। तो उसको स्टडी को इजी बनाने के लिए उसको डिफरेंट ग्रुप में कैटेगराइज कर दिया गया है, उसको कहा जाता है टैक्सन। फॉर एग्जाम्पल द सिंगुलर इज टैक्सन। सो टैक्सन किसको बोलेंगे? डॉग्स। ओके, द टैक्सन में बी डॉग्स, mammals, wheat, rice, etc. सो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उससे आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा टैक्सा क्या होता है। द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन into different taxa is called taxonomy. So it is a branch of science which deals with the study of classification of living organisms. Okay, so what are the basic to taxonomy? Taxonomy में हम क्या क्या पढ़ेंगे? Identification, classification and nomenclature. So this point is very important. What are the basic to the taxonomy? Identification, classification and nomenclature. पहले आइडेंटिफाई करना, फिर उसको क्लासिफाई करना, फिर उसके बाद उसको नाम देना, साइंटिफिक नेम देना। ये तीन है टैक्सोनॉमी का हिस्सा। ठीक है। देन सिमिलरली सिस्टमेटिक्स, ओनली टैक्सोनॉमी इज नॉट एनफ, सिस्टमेटिक्स, उसके बाद हमको सिस्टमेटिक्स पढ़ना है। दैट इज द सिस्टमेटिक स्टडी। सिस्टमेटिक ये कैसे बनेगा? Unless and until you establish the relationship between these group of organism, ये ऑर्गेनिज्म के बीच में एक रिलेशनशिप है। दैट्स व्हाई वी आर लिविंग टुगेदर, वी आर डिपेंडिंग अपॉन ईच अदर, सो दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। हो सकता है कि आज हम वी आर नॉट डिपेंडिंग अपॉन ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, बट इन आवर पास्ट आवर एंसेस्टर्स दे डिपेंडेड अपॉन दीज ऑर्गेनिज्म। सो दैट मीन्स इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, जब इवोल्यूशन हुआ हमारा कुछ रिलेशनशिप था। अगर हम इस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करते हैं तभी हमारा जो टैक्सोनॉमी है वो और भी सिस्टमेटिक हो जाएगा। एंड सच इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का जो स्टडी है उसको कहा जाता है सिस्टमेटिक्स। नाउ अभी टैक्सोनॉमी में हमने क्या बोला आपको? देयर आर डिफरेंट टैक्सन्स, बहुत सारे कैटेगरीज में ग्रुप में डिवाइड किया गया है। लेट अस सी व्हाट आर दिस ग्रुप। Each rank or each category of classification is termed as taxonomic category. जितना हम ग्रुप करेंगे उस ग्रुप को, एक एक ग्रुप को कहा जाता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ओके, एंड द अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज इन सीक्वेंस इज नोन एज टैक्सोनॉमिक हायरार्की। किसके बाद कौन सा ग्रुप को लिखना है वो एक सीक्वेंस मेंटेन किया जाता है और उसको कहा जाता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। नाउ अभी देखेंगे टैक्सोनॉमी हायरार्की में क्या है। सबसे पहले है स्पीसीज। ओके, सो व्हाट इज स्पीसीज? स्पीसीज आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज। ओके, तो स्पीसीज एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज, बेसिक सिमिलरिटीज है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊंगी मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा इंडिका इज द नेम ऑफ मैंगो ट्री। इस तरह आपका जैसे फाइकस इंडिका, ओके, फाइकस बेंगलेंसिस, सो लाइक दिस सो मेनी नेम्स आर देयर। तो जितने सारे प्लांट का इंडिका इज द स्पीसीज नेम, स्पीसीज नेम जितने प्लांट का होगा उनका कुछ कैरेक्टर सेम होगा, तो इसीलिए उनको एक ही स्पीसीज में डाल दिया गया, दैट इज इंडिका। ओके, सो हियर द स्पीसीज इज इंडिका। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, सबसे फंडामेंटल क्लासिफिकेशन का फंडामेंटल यूनिट क्या है? स्पीसीज। स्पीसीज सबसे छोटा ग्रुप होता है। फिर ऐसे बहुत सारे स्पीसीज का ग्रुप जिनका की कुछ कैरेक्टर कॉमन होता है, उन्हीं को लेकर एक जीनस बनाया जाता है। ठीक है, जैसे पैंथेरा इज द जीनस व्हिच इंक्लूड्स लायन। लायन का नाम क्या है? पैंथेरा लियो, पैंथेरा पैराडस, पैंथेरा टाइग्रिस।
तो इसमें देखो ये बहुत सारे स्पीसीज है, एक में है पैराडस, एक में है टाइग्रिस, एक में है लियो। सो ये 3 तरह का स्पीसीज, लेकिन उनका कुछ कैरेक्टर्स में सिमिलरिटीज है, तो उनको एक ग्रुप बना दिया गया, उसको एक कॉमन जीनस का नाम दे दिया गया, दैट बिकम्स योर पैंथेरा। सिमिलरली ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड जेनेरा इज कॉल्ड फैमिली। इस तरह ऐसे हम जैसे सोलानम, पेटूनिया, दातुरा, दे बिलोंग टू वन फैमिली। ठीक है, ये सारे क्या है आपका रिलेटेड जेनेरा, जीनस डिफरेंट जीनस, बट दे आर हैविंग सम कैरेक्टर्स इन कॉमन, सो दे बिलोंग टू वन फैमिली। एक फैमिली में फैमिली के अंडर आते हैं। देन फैमिली के बाद क्या है नेक्स्ट हायर ग्रुप इज ऑर्डर। तो इसी तरह आपका बहुत सारे फैमिली है जिनका की कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज आर कॉल्ड ऑर्डर्स। Okay, so like families Convolvulaceae, Solanaceae belongs to one order, that is Polymoniales. Next higher category is class, that is group of related orders. जैसे order Primata, order Carnivora belongs to one class, that is Mammalia. ये सारे mammal है. Next is your phylum. Phylum term is used in case of animals and division term is used in case of plants. Okay, so this is the next higher group और taxon. जो हमने taxon बताया, ये species, genus, family, order, class, ये सब एक एक taxon है. ठीक है, तो related class, बहुत सारे रिलेटेड क्लास को एक ग्रुप में डाल दिया जाता है, उसको कहा जाता है फाइलम। इफ इट इज प्लांट देन इट इज कॉल्ड डिवीजन। ओके, देन अल्टीमेटली ऑल रिलेटेड फाइलम्स आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म किंगडम, सो दैट्स व्हाई प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, सो दे आर रिलेटेड डिवीजन और रिलेटेड फाइलम। So here you can see a taxonomic hierarchy. देखो आप यहाँ पर शुरू हो रहा है, स्पीसीज से शुरू हो रहा है। इट इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज द स्पीसीज। ओके, सबसे छोटा कैटेगरी या टैक्सोन जो है, सबसे छोटा टैक्सोन स्पीसीज है। तो ऐसे बहुत सारे स्पीसीज को मिलाकर एक जीनस है, जिनके बीच काफी रिलेशन है। ऐसे बहुत सारे जीनस को लेकर एक फैमिली है, ऐसे बहुत सारे फैमिली को लेकर एक ऑर्डर है, ऐसे बहुत सारे ऑर्डर को लेकर एक क्लास है, ऐसे बहुत सारे क्लास को लेकर एक फाइलम है, ऐसे बहुत सारे फाइलम को लेकर, रिलेटेड फाइलम को लेकर एक किंगडम है। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखो, जैसे हम यहाँ से एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, होमो सैपियंस। ओके, होमो इज द जीनस, सैपियंस इज द स्पीसीज। सो सैपियन इज द स्पीसीज, होमो इज द जीनस। ठीक है, तो सैपियंस का कैरेक्टर क्या है? मेंबर्स ऑफ द जीनस होमो विथ ए हाई फोरहेड एंड थिन स्कल बोन, ये जिनका कैरेक्टर है उनको कहा जाता है सैपियंस। वो किसके अंडर आते हैं? होमो के अंडर आते हैं। अभी होमो किसको इंक्लूड करता है? ऑल द होमिनिड्स विथ अपराइट पोस्चर, सीधा खड़े होते हैं, और लार्ज ब्रेन, ब्रेन बड़ा होता है। ऐसे बहुत सारे होमो ग्रुप को लेकर, ऐसे होमो जैसा और कुछ ग्रुप को लेकर, जीनस को लेकर आपका क्या बन गया? प्राइमेट्स। प्राइमेट्स दैट इज होमिनिड्स, उसको कहा गया फैमिली, होमिनिड्स फैमिली। प्राइमेट्स विथ रिलेटिवली फ्लैट फेस एंड 3 डायमेंशनल विजन। ओके, 3 डायमेंशनल विजन, दोनों साइड भी देख सकते हैं, सामने भी देख सकते हैं, और उनका फेस धीरे धीरे फ्लैट है। ठीक उसी तरह ऐसे होमिनिड की तरह बहुत सारे काफी सारे फैमिली को मिलाकर आपका प्राइमेटा, primates are there. This is the order. So these includes the mammals, all the mammals with polar bones. Polar bone, you know, that is present in just below the neck, and the grasping finger. Finger grasp करने के लिए जो fingers होता है,
Then like primates, all other orders जो रिलेटेड है उन्हीं के साथ आपका एक ग्रुप बनाता है, that is called mammals. Okay, so who are mammals? Which are chordates with fur. Fur means hairs on the body. Okay, and milk gland. Similarly, those like mammals, all other groups or taxons together form a separate group, that is called common group, that is called phylum. So animals with backbone. Now such type of animal having similarities are included under a single kingdom, that is called animal kingdom. Okay. Now here will these are some examples with their taxonomic categories. So you have to remember these names. What is their taxonomic categories? Like man, its biological name is Homo sapiens, genus is Homo, family is Hominidae, order is Primata, class is Mammalia, phylum or division is Chordata. Similarly, housefly is Musca domestica is the biological name. Genus is Musca and Musca domestica and family is Musidae. Order is Diptera. Class is Insecta. Phylum or division is Arthropoda. Okay, so mango. Mangifera indica is the name. So the genus is Mangifera. Family is Anacardiaceae. Then order is Sapindales. Then class is Dicotyledone, and phylum is or the division. This is plant, so division is Angiospermia. The next other plant, that is wheat, Triticum aestivum. Triticum aestivum. So the genus is Triticum, family is Poaceae, order is Poales, class is Monocotyledone, and the division, because it is plant, so division Angiospermia. So these four examples you have to remember for your exam. Now in this part we have discussed up to the taxonomic hierarchy, and in our next session or next part of this chapter we'll discuss about the herbarium, botanical gardens, museums, zoological parks, and keys, flora, manuals. So these are all taxonomic aids. Okay. So basically we'll concentrate on the taxonomical aids, different types of taxonomical aids in our next section. Thank you for watching.